Hi friends, welcome on Europedia. So now forms have started coming out, and now this one is IIT Kharagpur PhD form. You can do PhD after masters also, and you can do PhD directly after BTech also. There are so many categories for which GATE score may not be required. Like if you are from some institute like IITs and all, it may not be required. If you are from sponsored category, from university teaching, you are doing in some university or colleges, you are working in some reputed private institutes. So sponsorship you may not be requiring GATE score. Your BTech and you have GATE qualified, GATE not very high score is required, just qualified plus good CGPA and good research work, then you can get into PhD plus through project, I mean through professor. If professor has taken you in some project, you can get into PhD in IIT Kharagpur. So there are different ways. So IIT Kharagpur information brochure, I will tell you, I'll ask you to go through this in detail. So what are the various guidelines for PhD, what are the important dates and instruction to fill this particular forms. There will be interview, there can be written exam for admission into PhD as they have mentioned. So see the last dates. So last dates are, you understand that okay, 31st March is the last date, and through project it is 2nd April, but you keep in mind 31st March, and then it may be in May you may be having interview or written exam in the May. And then you need to fill the form online, and you need to make all these things done. So then after this, if you go to this pages, next pages, where you will be given the research interest, research areas. Okay, so research areas, if you go to the forms, you will find the link, and in each department, like if you want to go join artificial intelligence department, then you can join artificial intelligence this way. And I don't know if National Education Policy 2020 will be implemented by IIT Kharagpur and all. In that it is written that if you join PhD program but after 2 years you want to leave it, you can get degree, master's degree, and you can go. I mean, National Education Policy says multiple entry, multiple exit. So if IIT start implementing it, you can enter into PhD, but if you think that no, it is not gonna work, you can come out of it. Scholarship is good, 37,500 or 37,000 rupees is the scholarship for first 1 or 2 years. So see the research interest, because that will help you to answer in the interview why you want to join PhD, in which area you want to do it. So research proposal application का पार्ट है कि नहीं वो देख के पता लगेगा, लेकिन आप अपने लिए रिसर्च इंटरेस्ट जरूर देख लेना किस में आप जाना चाहते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज CGPA 6.5 चाहिए आपके पास इन क्वालिफाइंग डिग्री. क्वालिफाइंग डिग्री इज इंजीनियरिंग डिग्री, अगर आपके पास उतना है तो. अगर आपके पास वो है, बीटेक डिग्री है और अप टू एमटेक डिग्री, बीटेक डिग्री के बेस पे आप डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं, तो आप उसमें एलिजिबल हैं. तो बीटेक और एमटेक और बीटेक भी है, आप जा सकते हैं. कुछ और क्राइटेरियाज हैं, जिससे रेगुलर जो इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप है, जैसे 37,000 रुपीज़ मिलता है, तो टीचिंग असिस्टेंट यूनिवर्सिटी असिस्टेंटशिप अगर आपको लेना है, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, then this is the scholarship you are going to get. Otherwise you can, if you are sponsored category, then you can join it. If it is not sponsored categories, you can get into through project also. इसको ध्यान से देखना, अगर आपके पास गेट वगैरह नहीं है तो थ्रू प्रोजेक्ट हाउ यू कैन एंटर इनटू इट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. जो ग्रेजुएट्स हैं आपके बीटेक हैं, आईआईटी वगैरह से जिन्होंने किया है, बीएस वगैरह, दे कैन ऑल्सो गेट इनटू दिस. एंड इसमें कैच हो सकता है कि जो आईआईटी मद्रास का बीएस प्रोग्राम है, जो आप ऑनलाइन करते हैं, जिसके लिए आप जाते नहीं हैं, तो आर यू एलिजिबल इफ यू हैव डन IIT मद्रास BS प्रोग्राम इन आई थिंक डाटा साइंस, तो क्या आप एलिजिबल हैं? मेरे को लगता है एलिजिबल हैं. एंड ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए. सो अप्लाई करो फ्रेंड्स, इन केस यू आर इंटरेस्टेड फॉर PhD, और यूरोपीडिया देखते रहो कैसे आपको एडमिशन लेनी है. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.